अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं आपको बताया कि EIN हासिल करने के लिए आपने SS4 फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसको आप सेंड करना है फैक्स के ज़रिए। तो फैक्स के ज़रिए मैंने आपको तरीका बताया था कि दो तरीके हैं। तो आप इसमें चले जाएं, ई फैक्स का लॉगिन ले लें फ्री ट्रायल का। 14 डेज़ का आपको ट्रायल वर्जन मिलेगा। 14 डेज़ के बाद ये आपसे अमाउंट काटेगा। तो आप 14 डेज से पहले भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इसको बेशक कैंसिल कर दीजिएगा। तो ई फैक्स का आप इस तरह लॉगिन आपको मिल जाएगा। तो ई फैक्स का इस तरह डैशबोर्ड होगा। यहाँ आपका नंबर आ जाएगा और आपने फैक्स कैसे सेंड करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ सेंड फैक्स पर आ जाना है और सेंड फैक्स पर आकर यहाँ पर सबसे पहले आपने यूएसए का नंबर चेंज करना है। मैं यूएसए में चले जाता हूँ। ये यूएसए आ गया, ठीक है जी। यहाँ पर आपका आ जाएगा EIN ऑपरेशन। यहाँ EIN ऑपरेशन आ जाएगा। ये नंबर जो कि मैंने सेव किया हुआ है, ये नंबर आपके पास आ जाएगा। नंबर है 8556416935। ये IRS का नंबर है। यहाँ पर आपने फैक्स जो है ना सेंड करनी है, ठीक है। आप यहाँ चाहें तो कोई मैसेज यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधा सब्जेक्ट पर आ जाइए। सब्जेक्ट आ जाएगा आपका और ऑब्टेनिंग EIN, ठीक है। अब अपने फ़ाइल चूज़ करनी है। अपने फ़ाइल चूज़ करने के बाद जो ना इसको फ़ाइल चूज़ करने के बाद आपने फ़ाइल चूज़ करें। फ़ाइल जो ही अपलोड होती है आप इसको जो ना सेंड फैक्स कर करेंगे तो ये फैक्स आपकी सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको कर ही देता हूँ। फ़ाइल में चूज़ करता हूँ। सपोज़ मैंने एक फ़ाइल चूज़ की, डाउनलोड अनटाइटल प्रोजेक्ट, इसको चूज़ कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी फ़ाइल है। ओके फाइन, ठीक है। सपोज़ मैंने ये फ़ाइल चूज़ की, ये फ़ाइल ये अपलोड हो गई। तो इसके बाद ये नंबर, ये सारा कुछ मैंने चेक कर लिया। ये नंबर है मेरे पास आया हुआ। ये ऑपरेशन, ये नंबर है। और यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा फॉर obtaining EIN। चूज़ फाइल करेंगे और इसके बाद हम इसको सेंड फैक्स करेंगे तो आपकी फैक्स जो ना वो चली जाएगी। और आपको इसका जो कंफर्मेशन है वो आपकी ईमेल में आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ ईमेल में कैसे आएगा। आप ईमेल खोलेंगे ना, मैंने अभी फैक्स सेंड की है, तो ईमेल खोलेंगे तो ये आपकी ईमेल में ये कंफर्मेशन आ गई है कि आपकी जो फैक्स है ना वो सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है इस नंबर पर, ठीक है। ये IRS का नंबर है और इसको कितने 182 सेकंड लगे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने फैक्सेस को सेंड कर दी IRS के डिपार्टमेंट को। अब इसके बाद आपने 5 दिन के बाद इससे फॉलोअप करना है। सपोज़ आपके पास 5 दिन के बजाय यूजली ये 4-5 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है, लेकिन अगर 4-5 वर्किंग डेज़ में अगर ये नहीं आता तो आपको ये 10 से 11 दिन के अंदर अंदर मिल जाता EIN। थ्रू आपके फैक्स आ जाएगा या फिर आपकी जो ना मेल बॉक्स है उसमें आ जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये है कि आपने फॉलोअप किसे कैसे करना है। फॉलोअप के लिए आपने ये नंबर नहीं यूज़ करना है। मैं देखता हूँ ये नंबर अगर आपको नज़र आ रहा हो। सॉरी, ये नंबर आपने यूज़ करना है अपने अकाउंट से। हम्म, 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 ठीक है। ये नंबर, ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। मैंने ज़रा इसको वर्ड्स को बड़ा कर दिया। तो ये आपने नंबर यूज़ करना है, यहाँ पर आपने कॉल करनी है और अपनी जो ना फॉलोअप करना है अपने EIN का। अब मैं फॉलोअप के लिए कॉल दिखाता हूँ कि मुझे जो कॉल हुई थी मैंने वहाँ कॉल की तो मुझे आगे से रिस्पांस क्या मिला है। तो हम लोग वैसे बड़े नॉर्मली हम कहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी जो ना बड़े सुस्त होते हैं, हडराम होते हैं, ईद आने से पहले 4 दिन पहले काम छोड़कर बैठ जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में यही सिस्टम चलता है। मैंने IRS डिपार्टमेंट, पूरी वर्ल्ड वाइड डिपार्टमेंट है USA का। और अंदाज़ा उसका करें कि इस कॉल के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि 25 तारीख को क्रिसमस आ रही है और 23 को वो अपना सिस्टम शट डाउन करके बैठ गए हैं, अपना सिस्टम डाउन करके बैठ गए हैं। और रिप्लाई मुझे क्या दे रहे हैं कि 23 से हमारा सिस्टम डाउन हो गया, हमारा सिस्टम डाउन है और हम रिप्लाई नहीं कर सकते। तो आप 3 के बाद, 3 जैन के बाद आना।
हमें कॉल करना, तो फिर हम आपको अपडेट देंगे आपके EIN के बारे में। तो चले कॉल सुन लेते हैं, आप भी देख लें क्या एक्सपीरियंस हुआ मेरा। Hello, my name's Miss Smiley with the Internal Revenue Service. My badge number is 100548. At the present time, our computer systems are down. Do you have a general question I can help you with? Hi, Ms. Miley. How are you? I'm good. Thank you for asking. You're welcome. Okay, actually, I was looking my EIN number regarding my new LLC. I applied 16th of December, but still I did not get any reply. Did you have a fax number on there for us to fax it back to you, or were we mailing it to the mailing address? I did not receive any fax right 16th of December. No, I'm waiting for any reply, but I did not get any reply, any mail, or any fax. Okay, if you didn't have a fax number on there for us to fax it back to you next to your signature and date at the bottom, we mail it back in 2 weeks. In next 2 weeks, is it possible? Can you give me the right now the number so I can write down the number so I can process my rest documents for my business? At this time, our computers have gone down, and Okay. I don't have access to do that until January 3rd. Okay. Okay. So could you find out my papers? Do you have papers in front of you? I mean, yeah, I don't know what is your procedures, because before one When you lady. fax them in, Okay. I'm sorry, go ahead. Yeah. Yeah, when you fax it in, they are bundled up and passed out. We've got 15 fax machines down there taking them in, and they bundle them up and pass them out to people to work, Okay. and they work them in date order received. Okay. Okay. So, do you think I have to wait a couple of days more? Yeah, because we don't have access to the computers to research if it's been assigned yet or not. Oh my God. This is this is a worldwide outage for maintenance and updates. And we Okay. won't be back up and running until January 3rd. And even at that time, we're on limited capability. Okay. Okay. So, after the 3rd January, the work will be start again. Am I right? Correct. Everything should be back up and running. We'll be able to research it. Well, not everything, but we'll be able to at least research your EIN and see if it's been assigned. Oh my God. Oh my God. So late. Still, we need 5 days more. Almost 1 week. I'm sorry, what? Still 1 week more. I have to wait. Unfortunately, because of the holidays and the outage, yes. Okay. 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 Fine. You got to count. Those are business days that are listed in there, and we've got the 30th off, so you can't count that, or the weekends, or January 2nd, because we're off. Okay. Oh my God. Okay, fine, fine. No issue. So, what do you suggest me? Should I send it again, fax, or I have to wait No, the reply? Okay. I would wait for the reply. Okay, fine, fine, fine. Okay, cool.
Thank you so much for your help. Or call back in that week and have us research it to see if it's been assigned so we can give it to you over the phone as long as you're an authorized person. Okay, good. That's the reason I'm calling. So, what do you think? Should I call you on Friday? When your holiday is going to start? Yeah, the computers aren't coming back up till January Okay. 3rd. It's not possible. It's not possible. So before 3rd Right, January is not possible anything. I got it. right. I got it. Thank you so much. Thank you so much for your help, You're welcome. for your humble, for your No patience. problem. Thank you. No problem. Thank you. You take care and have a happy new year. Happy New Year. Same to you. Have a good day. Bye bye. Thank you. Bye-bye. तो ये जी आपने रिकॉर्डिंग सुनी, जैसा कि उसने रिकॉर्डिंग में बताया कि उनका सिस्टम डाउन था और सिस्टम डाउन होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जनाब वो आपको कॉल कर रहे हैं कि आप 3 जनवरी के बाद वापस आएँ और कॉल करें हमें, तो हम आपको अपडेट देंगे। ठीक है। अब देखें 3 जनवरी के बाद मैंने कॉल की तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं उसका फॉलो अप आपको देता हूँ। तो सुने जी, रिकॉर्डिंग सुने। Thank you for calling the Internal Revenue Service. My name is Mrs. Larson. My ID number is 13. Are you calling regarding an employer identification number, or do you have a general question? No, I applied for the EIN, so still I did not receive any mail. I'm waiting since 16th of December. A couple of days before I called, they told me that call on 3rd of Jan. That's the reason I'm calling again. Okay, and is this employer identification number for yourself, or are you calling as a third-party designee? No, for myself. Okay, and can you provide me the legal name of the business? Yes, FLIX, Flix, LLC. Okay, perfect. And where was the business established? Houston, Texas. Okay. Yeah, exactly. And then space F for Fox, L for Lima, I for Indigo, X for X-ray, and then space LLC. Exactly. Okay. And give me just a moment. It does take a minute to Sure. research. Fine. And what is the zip code? Okay, zip code is let me check where is. Okay, 77005. Okay, thank you. Welcome. Trying to just narrow it down a little bit more. Okay. Got it. I'm not pulling any information up with that. And you said you sent it on the 13th of December? 16th of December. 16th. Okay. And what was the fax number that you sent it to? Fine. Let me give you fax number also.
Okay. 832 218 8186. Okay. Shall I repeat? That is not the correct. No, that's not the number to send in the SS4 application. Okay. No. This is my fax number. Where I sent this one? Like, Oh, okay. yep. So the fax number that you should have sent this to is 855 Yeah, 641 exactly. 6935. Yeah, 395, exactly. Okay. And I'm just going to make sure that there's not any notifications that have been sent out recently, if there's anything as far as, processing times. So give me just a moment. I just want to make sure. Please. Mm-hmm. You said the 16th of December. Yep. So that would have been Friday. So Monday technically would have been the first day. So yeah, you should have had it by the 23rd, but our systems did go down. Yep. So, I mean, that could stop the processing. I would honestly, if it was me, I would refax it just to be on the safe side and give it the 4 business days, because either way, I think you're going to have to wait because the systems were down, so nobody was assigning any. We did have like preliminary employer identification numbers. They were a temporary number, and you have to make sure that it actually, was going to be the correct number that you would receive permanently. But if this was just faxed in and the systems are down, then I'm sure that they're probably getting processed now because the systems just went back up today. Okay. So you could wait till Friday, or you can refax it. It's going to be up to you. But I would give it the 4 business days now that we are back up and running. Okay, fine. Okay. I will update you one more thing, because last time when I called, for the safe side, I faxed it again on the Friday, on 23rd of December, when they told me that Oh, okay. system was down and they are not able to pull anything. Yeah. So I refax again. So my I maybe give it to Friday. Give it to this Friday, and okay. let's see if they've assigned it. I mean, we can't assign it unless it is internationally, but we are able to see if they have assigned it. We can still look it up for you, like we did today. You can always give us a call back, and we can definitely take a look for you. Okay, so I have to wait again till Friday. Yeah, I'm so sorry. No, it's fine. Yeah, I would wait till Friday Okay. Okay. just to be safe. Okay, cool. Fine. Yeah. Thank you. Thank you very much. All right. You're very welcome. Thank you for understanding. Have a good day. Bye-bye. Thank you. You too. Bye-bye.